Hello and Namaste traders. Today we are on the 14th of March 2022, Monday, late afternoon, 4:45 p.m. and celebrate the World Pi Day. Those who are slightly mathematically inclined, enjoy your Pi Day today. Nevertheless, आज के इस पोस्ट मार्केट वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी गोना टॉक अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी, देन वी विल क्विकली scan the Nifty 200 and find any trading opportunities for tomorrow's trade. And towards the end of this video, I will talk about one interesting stock where I found pretty decent buying towards the end of the day's trade. So Nifty Bank Nifty पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद स्कैन करेंगे Nifty 200 और लास्ट में एक ऐसा स्टॉक जिसमें लास्ट 30 मिनट्स में काफ़ी अच्छा हाई वॉल्यूम बाइंग देखने को मिला था आज के ट्रेड पे. क्विकली निफ्टी का व्यू, जो शॉर्ट टर्म बाउंस बैक था वो अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है. दिस बाउंस बैक इज एक्सटेंडिंग इटसेल्फ फर्दर अप एंड नाउ इट हैज़ एंटर्ड द 16817 के रेंज. अगर हम लोग 75 मिनट टाइम फ्रेम को देखें तो क्लियरली आपको दिखेगा कि आज के ट्रेड पे कंप्लीट डोमिनेंस था फ्रॉम द बुल्स. दिस इज अ 75 मिनट टाइम फ्रेम एंड ईच ऑफ द बार्स मेड अ हायर हाई एंड हायर लो in today's trade, which clearly shows that the bulls are in no mood to give away. However, ये जो बाउंस बैक है, ये जो करंट बाउंस बैक से हम लोग गुजर रहे हैं from low to high basis, it is given us 7.7%. So almost 7.5% का एक low to high लेवल पे बाउंस बैक अपने को दिख रहा है अभी. और मुझे लगता है कि ये जो बाउंस बैक है ये 16800 और 17K का जो जोन है यहाँ पे आके रुक सकता है, थम सकता है. बिकॉज आई फील दैट 16800 17K लेवल हैज़ सम डिस्टिंक्ट prominence, some distinct advantage in terms of being a resistance. We can clearly see it was a support in the past and it was quite a decent support. Then it did act as a pretty good zone of resistance, and now the prices are entering this zone once again. अगर हम लोग प्राइस मूवमेंट के साथ इंडिकेटर्स को एक बार तुलना कर ले, इफ़ वी कंपेयर प्राइस एंड द मोमेंटम इंडिकेटर्स, we do not notice anything significant. We do not see any signs of divergence or any kind of slowdown from the price or on the indicators per se, apart from the fact that it is a little stretched, it is a little overbought, but that's it. Which means that the short-term bounce back, which has reversed the underlying trend, ये जो short-term bounce back है इसने short-term trend को reverse कर दिया ऊपर की तरफ, और reverse करने के बाद ये initial short term fall था, उसके बाद this is a follow through. I think we discussed this in Friday's video. The same thing we noticed on the bank nifty, उस पे आएंगे, but उसके पहले निफ्टी को sum up कर लेते. Now that it has entered the 16800 17K range, यहाँ से I think और 100-150 पॉइंट का रैली बिल्कुल हो सकता है. Today the strength was very evident. But if you are participating in the long side, if you have bought stocks at lower levels, use this rally to protect the open profits, trail the stop loss, or look to do some partial booking. अगर आपने इस बाउंस बैक में पार्टिसिपेट किया है और आपके पास शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशंस ओपन है, तो ये जो स्ट्रेंथ है इसको यूज़ करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, और हो सके तो पार्शियल बुकिंग स्टार्ट कीजिए अपने प्रॉफिट्स का. जब तक कि आज का लो नहीं टूटता है फॉर द निफ्टी फ्यूचर, टुडेज लो वी विल यूज़ इट एज द फर्स्ट साइन ऑफ शॉर्ट टर्म सपोर्ट, एज अ फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, जो कि 16,610 to 16,600, और इसको 16,500 16,600 का रेंज देते हैं. जब तक ये 500-600 का रेंज नहीं टूटता है नीचे की तरफ, तब तक आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस टू गो बेयरिश राइट नाउ. बैंक निफ्टी में जाने के पहले डेली चार्ट्स अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है. ये हम वी विल नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट, एंड ये धीरे धीरे अपने एंकर्ड वीवैप के पास जा रहा है. सो क्या ये यहाँ से फिर से नीचे गिर सकता है? इसका आंसर अपने को बाद में मिलेगा. वंस वी सी दैट द प्राइस स्लोज डाउन, मे बी इट फेसेस स्टिफनेस ऑन द अपसाइड एंड कांट गो अप. If we see any sign that it is tired and it's going to fall, then we will answer this question. As of now,
देयर इज़ नो सच साइन। बैंक निफ्टी पे आते हैं। Now bank nifty is also behaving in a very similar way. On the daily chart it is in a downtrend. On a 75-minute time frame it is given us a nice bounce back. In fact आपको याद होगा, आई थिंक हम लोग ने फ्राइडे के वीडियो पे ये डिस्कस भी किया था कि ये ब्रेकआउट आ सकता है मंडे जाके, एंड एक्जैक्टली दैट इज़ हाउ द बैंक निफ्टी हैज़ डन। एक वॉल्यूम प्रोफाइल अगर ड्रॉप करके समझने का कोशिश करें कि वॉल्यूम प्रोफाइल हाउ इट हैज़ प्लेड आउट, so we can see that 34,589, 30,590, 34,600 और 34,300 के जोन पे के रेंज के आसपास वॉल्यूम्स सबसे ज़्यादा हुआ है, तो इसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ सपोर्ट मान सकते हैं कुछ हद तक। बट बैंक निफ्टी लाइक द निफ्टी इज़ ऑल्सो होल्डिंग वेल टू इट्स शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड। आगे जाके इसका रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 35,900, 36,000 के आसपास क्लियरली एक रेजिस्टेंस बनता है। एंकर्ड वी वैप, इंटरमीडिएट मूविंग एवरेजेस सब वहीं पे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। सो 36,000 बैंक निफ्टी के लिए और 17 के निफ्टी के लिए यूज़ करके देखते हैं कि क्या इस जोन पे बोथ द इंडाइसेस शो एनी काइंड ऑफ स्लो डाउन और नॉट। But till then, from a short-term point of view, it makes sense to stay a little bullish, but be careful to protect your profits, and also it doesn't hurt to book some partial profits also. Now, let's go to the Iris Plus software, which we will use to scan the Nifty 200 stocks for some inside bars, the bullish bearish army pattern, and if possible, some breakout candidates. तो चलिए inside bar आज के क्लोजिंग प्राइस पे सिर्फ एक पे ही है, विच इज़ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। नॉट अ बैड कैंडिडेट, इसमें काफ़ी रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सो वी हैव टू वेट फॉर द रेंज ब्रेकआउट। अपार्ट फ्रॉम दैट बुलिश बेरिश आर्मी पैटर्न को अगर छांट ले तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ नॉट रियली उतना खास नहीं है। डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा खासा बेरिश आर्मी पैटर्न बनाया इसने, और एक डोजी के साथ, सो वन कैन लुक बिलो टुडेज लो अगर इसमें वीकनेस दिखता है तो। आप कभी भी अगर पैटर्न्स ट्रेड करो तो एक चीज़ याद रखिए दैट वंस वी हैव अ पैटर्न एंड इफ़ वी एक्सपेक्ट दैट इसके नीचे बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन कल ऊपर ही खुलता है, इसका हाई निकाल देता है, फिर जाके अगर ये गिरना चालू होता है तो उस ट्रेड को ना लीजिए। डू नॉट टेक सच अ ट्रेड इफ़ the high of this kind of a pattern is breached before the low. Try not to take such trades. Don't worry. There will be a lot of trades following through. Next, MFSL we have checked. This is not a bearish army pattern because इसमें कोई uptrend नहीं है. DMart is flat. There is no trend. Sun Pharma is kind of a bearish army pattern, but इसमें range expansion है, so इसको consider ना करें तो ही better है. Siemens is also trendless. JSW Steel has gone through a pretty decent bounce back and now it has created a bearish army pattern, so that's one. Metals आज के डेट पे थोड़ा वीक था, बैंक्स स्ट्रॉन्ग थे, IT डिसेंटली स्ट्रॉन्ग था, सो मेटल्स में कुछ सेलिंग हो सकता है, वी कैन कीप अ क्लोज लुक। RBL बैंक नॉट रियली, लाल पैथ लैब नॉट रियली, इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एज सच ट्रेंड्स नहीं है जिसके बेसिस पे। टाटा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसमें क्या एक बेरिश बुलिश आर्मी पैटर्न है? नो, दिस इज़ नॉट अ बुलिश आर्मी पैटर्न, इट डज नॉट हैव अ डाउन ट्रेंड। सीमेंस वी डिड टेक अ लुक एट, धानी नोप, LNT FH। नाउ दिस लुक्स इंटरेस्टिंग बिकॉज ये एक 1 2 3 4 डेज ऑफ बाउंस बैक कंसोलिडेट किया आज के डेट पे, एंड पॉजिटिव कैंडल के बाद नेगेटिव स्मॉल कैंडल। आज का जो लो था 64.75, उसके नीचे आप बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बिकॉज वी आर स्कैनिंग द निफ्टी 200 कैश मार्केट्स, इट्स बेटर टू स्टिक टू बुलिश बायस। मैं क्विकली ब्रेकआउट कैंडिडेट्स देखता हूँ, पॉजिटिव ब्रेकआउट कैंडिडेट्स। ACC आफ्टर मूविंग फॉर 3 days हैज़ गॉन साइडवेज, for 3 bars it has gone sideways, so above 2065 you can expect a short term movement from ACC. Overall Realty is also similar in nature. 3 दिन के बाउंस बैक के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, आज का हाई 917.95, सो 918 काइंड ऑफ लेवल्स के ऊपर एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक फॉलो थ्रू मूवमेंट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ओवरऑल रियल्टी. DMart not in a very strong uptrend or downtrend, it is flattish, but it's buying time. 42.39, 42.10, 42.18, so 42.30, 42.40 का एक अलर्ट लगा के रख सकते हैं आपके
प्लेटफॉर्म पे कि अगर उस लेवल को निकाल देता है देन इट कैन फाइंड सम फॉलो थ्रू बाइंग ऑन दी अपसाइड. अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए वेदांता कंसोलिडेट कर रहा है, टाटा स्टील कुछ हद तक कंसोलिडेट कर रहा है, इनफैक्ट हिंडाल्को का भी चार्ट था जो कि कंसोलिडेट कर रहा है. इसका मतलब आज सुबह जो मेटल्स में वीकनेस देखने को मिला, द वीकनेस दैट वी सॉ इन द अर्ली ट्रेड ऑफ today's session, it can lead to a bit of bounce back because the trend is very very strong. So metals I think needs a little bit of careful watch, right, rather than to create a one way view. Oracle long doesn't fit that good, and amongst these stocks if there is any kind of shorting opportunity, doesn't look that great, and the markets have been very strong, so it's better that we stick our neck out and stick to short-term long trades only. Now for the last session of today's video, that is discussing that one stock jahan pe I noticed last 30 minutes mein there was a pretty decent amount of buying, and that was TCS. TCS का अगर आप intraday charts देखें 75 minute time frame, I am talking about this particular bar which saw a pretty nice movement taking the stock to the day's high. So TCS में हो क्या रहा है? TCS has gone through a pretty decent fall in the recent past, and अगर हम लोग volume profile drop करें last leg of the fall का, then this is the kind of reading that we get. It has shown a bit of high volumes in the middle somewhere here, and then the chunk of volumes is up here, ठीक है, in this zone. All right. Now in this bounce back, the stock has reversed its uptrend. Its reverse is downtrend, I'm sorry. The short term trend is now up. Short term trend up जाने के बाद, after it had gone up, it has given this short term correction, and now it's giving a follow through movement, right? Very similar to the Nifty Bank Nifty kind of setup that we were discussing on Friday. Now in this rally, in this trend reversal, is lowest points है अगर current bar तक एक volume profile drop करे तो इस बीचों बीच इसका अच्छा खासा वॉल्यूम्स हुआ है जहाँ पे 35, 50, 35, 40 के लेवल्स पे. सो गोइंग फॉरवर्ड आज का जो 5 बार्स पे अगर हम लोग फोकस करें, दिस इज 75 मिनट टाइम फ्रेम. 75 मिनट टाइम फ्रेम में 5 कैंडल स्टिक्स होते हैं, ये 5. सो आपको नोटिस होगा कि फर्स्ट बार प्रिटी डिसेंट बाउंस बैक विद स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस एंड द अदर IT स्टॉक्स. फिर ये थोड़ा कंसोलिडेट होके करेक्ट होके फिर से कंसोलिडेट होके लास्ट आवर में पिकअप कर लेता है, एंड टुवर्ड्स द क्लोज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे क्लोज देता है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट हैवीवेट IT स्टॉक, एंड मुझे लगता है दैट इट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू गो एंड ट्राई एंड क्लोज दिस गैप. ये जो गैप के साथ वो गिरा था रिसेंटली, इस गैप को क्लोज करने का कोशिश करेगा. इस गैप को टेस्ट कर चुका है, मुझे नहीं लगता इसने अभी तक उसने क्लोज कर पाया. क्लोज करने के लिए इट हैज़ टू क्लोज दिस लेवल. दिस लेवल इज़ अराउंड 3700. सो आई थिंक, मुझे लगता है कि ये जो लास्ट आवर का बाइंग था, ये हो सकता है स्टॉक को 3700 तक ले जाने का कोशिश करे. वी विल सी हाउ इट बिहेव्स ऑन द अपसाइड. ये पूरा सेटअप नेगेट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है इफ़ इट ब्रेक्स बिलो 3580. ऑल दिस लेवल्स एंड दीज चार्ट्स आर ऑन द फ्यूचर्स मार्केट. So you can keep a close look at this stock TCS for the rest of this week. All right. Thank you. This is the market view for the day. My time to sign off. And let's see what's in store for us tomorrow. Thank you. Take care of yourselves. Trade well and trade wise.